मरकजी हुकूमत के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और FICCI के इश्तराक से हैदराबाद में ग्लोबल समिट चल रहा है। समिट का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन के इजलास में मरकजी वजीर हर्षवर्धन ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान ज़राअत, सेहत, फूड प्रोसेसिंग और तवन्नाई पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। वाज़ेह है कि इन शोबों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फरोग के लिए हर साल मुल्क के किसी एक शहर में इस तरह की समिट मुनक्किद की जाती है। हैदराबाद में मुनक्किदा समिट में अफ्रीकी ममालिक के लीडर्स भी शरीक हैं। The summit focused on the theme International Collaboration in Research and Development for Sustainable Growth with partner continent Africa. India's science and technology achievements have steadfastly triggered India's growth and delivered socio-economic impact development. The vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is to share our technology and innovations for shared prosperity in our partner nations in Africa. India wishes to also create bilateral and multilateral platforms with like-minded South-South cooperation partners to forge collaborations to ensure sustainable growth in the developing countries. I am delighted to note that this year's partner continent is Africa. The Ministry of Science and Technology in India has been conducting multiple programs in and with Africa implemented by FICCI's Center for Innovation, Science and Technology Commercialization called FICCI-CTAC. For several decades, India has provided scholarships to tens of thousands of African students at undergraduate, graduate, doctoral and postdoctoral levels. Researchers and fellows are invited to specialized institutions. We have helped this model and have established institutions of collaborative research, capacity building and enterprise development.